अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में, और यहाँ पर हो रहा है, जैसे कि आप जानते हैं कि इससे पहले भी हमारा एक एपिसोड आ चुका है जो आपने देखा होगा, अब पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल, जिसमें 45 से ज़्यादा इवेंट्स हैं। 30 दिन का ये फेस्टिवल है, जिसमें 7 से ज़ायद इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी थिएटर ग्रुप्स और 27 से ज़ायद पाकिस्तानी थिएटर ग्रुप मौजूद हैं। आज के एपिसोड में मैं कवर कर रहा हूँ एक वर्कशॉप, एक टॉक शो। और इस टॉक शो का जो सेटअप है वो ये है, ये आप देख रहे हैं। इसका नाम है थिएटर वर्सेस स्क्रीन, यानी कि थिएटर और स्क्रीन में क्या फ़र्क है, और इसमें कौन कौन लोग मौजूद हैं उस पे आगे जाके नज़र डालते हैं और देखते हैं कि आज इस थिएटर फेस्टिवल के अंदर जो ये टॉक शो हो रहा है, इसमें किस किस्म का कंटेंट डिस्कस किया जा रहा है। This is the venue of the talk show at Pakistan Theatre Festival। और यहाँ पर जो इस वक्त पाकिस्तान से और श्रीलंका से भी कुछ जो है रिप्रेजेंटेटिव्स, मीडिया पर्सनैलिटीज़ जो हैं इस टॉक शो में पार्टिसिपेट कर रही हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जी आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है थिएटर वर्सेस स्क्रीन, यानी कि थिएटर एक्ट और स्क्रीन के ऊपर जो परफॉर्मेंस होती हैं, जिसमें फिल्म्स हैं, टेलीविज़न ड्रामाज हैं, उनमें क्या फ़र्क है उसके बारे में, किस में क्या स्कोप है, किसकी इंडस्ट्री कहाँ जा रही है इन द सिनेरियो ऑफ द पाकिस्तान एंड द इंटरनेशनल सिनेरियो एज वेल। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस वक्त कवर होंगी आज के इस टॉक शो में। जो सेशन है इसको हम लाइव करेंगे और उम्मीद है कि पीपल विल फॉलो। कोई चीज़ नहीं समझ आ रही होगी तो हम कोशिश करेंगे कि उसको रिपीट करें लैंग्वेज में। क्योंकि हमारे दो मेहमान ऐसे हैं जिनको उर्दू समझ में नहीं आती, वो श्रीलंकन है, तो हम कोशिश करेंगे कि इंक्लूसिव रहें। और अगर वक्त मिला तो हम सवाल जवाब का भी सेशन रखेंगे, लेकिन बहुत मुख्तसर सा। तो मैं सलाम करती हूँ और खुशामदीद कहती हूँ अपने मेहमानों को। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा के चलूँ। मेरा नाम कैफ गज़नवी है। मैं एक विजुअल आर्टिस्ट हूँ, एक अदाकारा हूँ, एक परफॉर्मर हूँ। मेरे साथ बैठे हैं रेहान शेख, इनको आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे मुख्तलिफ किरदार निभाते हुए, जो कि हमारे जहनों पर, हमारे आसाब पर भी कभी कभी सवाल हो जाते हैं, क्योंकि इनकी एक्टिंग का जो अप्रोच है वो बहुत ज़्यादा इनहेरेंट है इन रिसर्च। और रेहान जो है he belongs to Pakistan as well as UK. You travel between countries, and that is why you can see a lot of his work ethics um, instilled in the way he acts and the way he approaches his character. इनके साथ बैठे हैं सैफी हसन। ये भी बहुत जानी मानी हस्ती है हमारे मुल्क की, क्योंकि ये एक अदाकार भी हैं पर ये एक डायरेक्टर भी हैं। और ये दो चीज़ों को हैंडल करना आज के दौर में ये बड़ी ही एक बड़ी कारकर्दगी है इनकी। It's a huge ability to do that. So we want to talk a lot about his journey. इनके साथ बैठे हैं रुवांधा चिक्केरा। ये श्रीलंकन है, एक लिखारी है और एक डायरेक्टर है। ज़्यादातर थिएटर और फिल्म के साथ इनका ताल्लुक रहा है। और आज के हमारे मेहमान हिदायत हज़ीर श्रीलंकन एक्टर है, सिंगर है, और इनका ज़्यादातर जो काम है और गाने हैं वो सोशल पॉलिटिकल सैटायर से रिलेटेड है।
प्योर सिक्योर होती है। और एक्टर्स जो हैं वो जब तक वल्नरेबल नहीं होंगे तब तक वो टैकल नहीं कर सकते बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स में या ऐसी एक्टिविटीज़ में जो कि हमारे काम को उस तरह बनाती है और हमारे जो नाज़रीन हैं और मेज़बान हैं उनके दिलों को छूती है। तो ये जो कॉन्वर्सेशन होगी हम थोड़ा सा इस बेसिस पे लेके जाएंगे। Ruwanthie and Hidaayat, I just want to repeat what I said, that how vulnerability is an asset and a skill that one develops. And if आप का जो एक दौर मैंने देखा और थोड़ा बहुत जो मैं अपने नाज़रीन को भी सुन बताया कि आप एक एडिटर भी हैं, आपने थिएटर से शुरू किया, फिर आपने एडिटिंग में भी अपना कमाल दिखाया, फिर आप एक डायरेक्टर अब बनते हैं, साथ साथ ऑब्वियसली स्क्रीन में एक्टिंग भी करते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं इन सब डिसिप्लिन्स की, आगे तो ये परफॉर्मिंग आर्ट्स के मीडिया के सेक्शन में, पर इनकी कॉम्प्लेक्सिटीज जो है वो बहुत डिफरेंट है। तो इनको हॉट करना आपके लिए क्यों पॉसिबल था? आपको क्या लगा कि मैं ये कर सकता हूँ और आप एक ही चीज़ की तरफ क्यों नहीं गए? अच्छा, मैं थिएटर ही करता था और थिएटर ही करना चाहता था और थिएटर में हमेशा दूसरे किरदारों की स्किन में जाना मुझे वो चीज़ थी जो मुझे अट्रैक्ट करती थी, जो जिसके लिए मैं थिएटर की तरफ गया था। बुनियादी तौर पे मैं एक टीचर था और दिन में मैं टीचिंग किया करता था और रात में शाम में हमारा थिएटर ग्रुप की रिहर्सल हुआ करती थी। While I was doing that theatre practice, I was actually there is a program called Portrait of Women Media. Portrait of Women Media was a program by UNDP, United Nations Development Program. एक कोर्स था जो हमको थिएटर से टेलीविजन की तरफ ले गया। इनिशियली मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया और मैं बहुत लॉस्ट फील करता था अपनी क्लासेस में, क्योंकि हम लोग जिस प्रैक्टिस से आए थे थिएटर की प्रैक्टिस से, उसमें मुझे लगता है कि उसमें और टेलीविजन में बहुत फर्क है, सोच का ही फर्क है। पता नहीं कैसे रेहान भी दोनों चीज़ों के बीच में डाउन करते हैं, तो आप दोनों खुद करते हैं, तो मुझे नहीं पता कि आप लोग कितना एग्री करते हैं, लेकिन मुझे लगता है दोनों चीज़ें बिल्कुल मुख्तलिफ सोच की चीज़ें हैं। सिवाय इसके कि एक्टिंग इसमें भी होती है, एक्टिंग उसमें भी होती है, लेकिन अगर आप कोई किरदार डेवलप करते हैं थिएटर में तो आप बुनियादी तौर पे उस किरदार When I came back from the PTV Academy after doing this UNDP thing, when I came back, we thought that we had to learn technicalities और उस technicalities को लेके हम डायरेक्टर बने। और उसके बाद मैंने एक क्योंकि मैं एनजीओ के साथ दिल्ली के साथ इन्वॉल्व था, तो एनजीओ सर्कल में मैं बहुत से लोगों को जानता था। उस ज़माने में 90s की बात है, लेट 90s में पाकिस्तान में कोई चैनल्स वगैरह नहीं आए थे, तो इतना चैनल में मतलब काम नहीं होता था। आपको पीटीवी में बहुत से लोग थे जो सरकारी मुलाजमीन थे। आपको मुझे ये एक अहम एक इदारा होता था, अहम वालों ने एक टेलीफिल्म बनानी थी, वो मैंने डायरेक्ट की और फिर उसके बाद जब मैं खुद देखी तो मुझे अंदाजा हुआ कि क्या खास काम किया मैंने। मैं बिल्कुल ये काम दोबारा नहीं करना चाहता हूँ। तो लेकिन उस वक्त तक इतना हो चुका था कि मैं टीचिंग से काफ़ी दूर हो गया था, क्योंकि ये एक 3 महीने की ट्रेनिंग थी, फिर उसके बाद उसके फॉलो अप कोर्सेज थे, तो मुझे बहरहाल कोई ना कोई अपना जरिए मार्च चाहिए था कुछ कमाने के लिए। सो डिफरेंट। आपको बुनियादी तौर पे कहानी सुनाने का एक अमल होता है, वो कहानी सुनाना आने चाहिए। हम थिएटर में कहानी सुनाते हैं और ये टेलीविजन में कहानी सुनाते हैं, इसकी टेक्निकल डिफरेंसेस हैं। मतलब आपको ज़ाहिर थिएटर में किसी और तरह से कहानी सुनाते हैं, लेकिन थैंक यू बेटा, खुश हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैफी हसन। मैं एक अदाकार, एक हिदायतकार और एक थिएटर प्रैक्टिशनर हूँ पुराना। मैं इस थिएटर फेस्टिवल के लिए स्कर्दू से भागा भागा कराची आया
क्योंकि एक ज़माना था कि जब हम लाहौर जाया करते थे रफ़ी पीर थिएटर फेस्टिवल के लिए, बहुत अरसे से वो अब मुनक़ता हो गया है सिलसिला। तो अब ये एक नया सिलसिला आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने शुरू किया और ये बड़ा खुशाइन है, ख़ासतौर पे थिएटर लवर्स के लिए ये तो एक जन्नत है कि आपको दुनिया का थिएटर पाकिस्तान में देखने मिल रहा है। और अगर ये सिलसिला जारी रहा तो मुझे कोई इसके अंदर आर नज़र नहीं आती कि पाकिस्तान में भी अच्छा थिएटर अभी भी ऑलरेडी प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन और मज़े का थिएटर, मैजिकल थिएटर प्रोड्यूस होने लगेगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान। थैंक यू सर। ब्रिज छूट गया। तो जब मैं कहानी सुनाने लग गया और मुझे ये चीज़ समझ में आ गई कि मुझे अपनी कहानी को ट्रांसलेट करना है एक लिखे हुए जुमले से ऑन स्क्रीन, और उसको इस तरह सोचने लगा तो फिर इट मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस। मेरी जिंदगी बदल गई थी उसके बाद। फिर उसके बाद लोगों को मेरी बात समझ में आने लगी, मुझे अपना खुद काम देखने में उतना बुरा नहीं लगता था जितना शुरू में लगा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें हमारी होती चली गई। तो मैं समझता हूँ कि एक ब्रिज है टेलिंग ए स्टोरी दोनों चीज़ों के बीच में, कहा थिएटर के और टेलीविजन के बीच में। वो मैंने जब थोड़ा सा एक वो पुल बांध लिया तो फिर उसके बाद थिंग्स बिकेम इजियर। in all the genres of media. You yourself are a writer and a director. How different? What is the difference for your storytelling as a director when you're creating that drama, when you've written it yourself, as opposed to when it's written by somebody else and you are adapting it in your direction? Um, So I'd like to answer that question by, I think it's a good question, but I'm going to phrase it to myself slightly differently to explain what I do. So I am a writer, so I write for film scripts, screenplays, and I also write in theatre, and I only direct in theatre, and I haven't directed anything in film. But I also in the theatre, I direct through devising. So I don't know if the audience is aware of what devising is, and maybe I should explain. There is to us. So traditionally, in a play or in a film, you have a script which is written. It has been written by one person. That person, they could be the director, they could be the scriptwriter. They hand it over to a director, and then there is cast. You get your roles as actors. You come in, you play your roles. You're told what to do. The director will tell you to stand and say this line, etc., etc. So it's very clear cut. There's writing, directing, acting. When we devise our work, it is not like that. It's a very collaborative journey that a group of people make together. And what comes out of that is very much dependent on the group that we get together at that time. So, for instance, if the five of us go to sit and devise a play together, it will be based on the contributions, the interests, the preoccupations, the best devising processes, really. Really telling what the five of us need to say to the world together. Know where the direction will take, right? Like you said, it's so collaborative and it could totally go south also. So my next question Rehan, is with you. इतने बड़े collaborative group के अंदर, and you've worked extensively in UK as well as in Pakistan. How do you, when you're collaborating, and there are people who have different says, a different mindset that they're approaching that set with or that stage with,
shows with 30 students each over a process of 3.5 months, the whole semester. And we use the device process. And so the exciting thing for actors is always that they are bringing the characters they kind of observed, and they feel kind of more ownership rather than being given a script. तो उनके लिए ये उनको ये एक्साइटिंग लगता है कि उस जर्नी में ये जुमले जो है उन्होंने पैदा किए हैं उनकी ऑब्जर्वेशंस में and I think editing and the director is still the outside eye is still important because you can endlessly improvise things and they can go worse as well. So of course there has to be somebody watching you and you decide, or even collaboratively you can decide what are the best things out of the collaboration. And of course sometimes there are problems as well because when you have people working in this way, but if you set the guidelines, I worked in a show called Partition where we all played 7-8 roles each, and we opened that Edinburgh Festival back in a long time ago. And we created a device show, but we were given these short stories, and we were assigned, you were improvising this character, you were improvising. So there was a storyline that was created beforehand, and we worked through that. So of course the vision has to be clear. Hidaayat, my next question is with you. You've listened to all the directors who are sitting here. You're somebody who's an actor and a singer. And I was supposed to ask you something else, but having you come at the conversation with you, you heard yourself last night during the performance, and it was हम बात कर रहे थे तो रेहान ने कहा मैं बहुत अच्छी हूँ मैं एक्टिंग कर आगे बहुत बड़ी चोट लगी. We needed to get a doctor on board for him. He's still in a lot of pain, so probably he's going to have a lot of painkillers. My question to you is, how do you? This is something out of the blue, right? No actor is ready. I mean, you've rehearsed so many times, but nobody's ready for that pain if an accident happens. And since we have so many students here, how does one then go through that particular setback and then you perform it to the last? I think it's definitely that vulnerability you were talking about earlier. I don't know, it's just, I think as artists, we just, like while we are at it and like exploring our own form, we kind of like don't really care too much about ourselves, and we are always like trying to get lost in the expression and not control ourselves too much. So I guess in that sense, like I felt it, like I got this ache while performing, and then I figured I couldn't bend down. But that doesn't mean that my character couldn't. It was just Hidaayat as a performer getting this pain. But obviously there's a limit to it. Like if you like break a bone or something, I'm pretty sure you have to improvise around it and then like do something. But this was something I just thought I could go ahead with it. And at the same time, because I was just thinking as my character at the point, I didn't kind of realize, or like it didn't like dawn to me that okay, this is like drawing hurt and pain and you should move or whatnot. Because the character doesn't know that. So the more lost you are in it and the more you let the story take you and operate you, then I guess it just becomes something, and it's, if your mind is aware of it, then that becomes a reality. आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि पूरा का पूरा एक शेड्यूल मौजूद है इस फेस्टिवल का शेड्यूल, और जिसमें जैसे कि मुझे कानिया नज़र आ रहा है जो कि 9 बजे होगा, श्रीलंकन ग्रुप ये प्रेजेंट करेगा, और डांस परफॉर्मेंस है 10 सितंबर को है। और उसके बाद हम आगे आए तो सेनो जो है ऐसा उर्दू थिएटर, और जो कि 26 तारीख को होगा, और ये ट्रेजेडी शो है। और हम आगे आएँ
तो ये एक याद के नाम से है, जो कि उर्दू साइकोलॉजिकल ड्रामा है। और इसी तरह के बहुत सारे हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ये एक फ़ारसी है, बीवी हो तो अपनी, एक एक फ़ारस और उर्दू दोनों ज़बानों में मौजूद है ये। और इस तरह के बहुत सारे, टिक टैक के नाम से एक पर्शियन थिएटर है ये, टिक टैक के नाम से, जो कि 8 बजे होगा 3 अक्टूबर को। तो ये पूरा शेड्यूल आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जो कि यहाँ पर लगा हुआ है। Hidayat, my next question is with you. You've listened to all the directors who are sitting here. You're somebody who's an actor and a singer. And I was supposed to ask you something else, but having you come at the conversation with you, you hurt yourself last night during the performance, and it was. हम बात कर रहे थे तो रेहान ने कहा मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं एक्टिंग उसने कहा मैं एक्टिंग नहीं कर रहा था, तो आगे बहुत बड़ी चोट लगी। And we needed to get a doctor on board for him. He's still in a lot of pain, so probably he's going to have a lot of painkillers. My question to you is, how do you? This is something out of the blue, right? No actor is ready. I mean, you've rehearsed so many times, but nobody's ready for that pain if an accident happens. And since we have so many students here, how did how does one then go through that particular setback and then you perform it to the last? I think it's definitely that vulnerability you were talking about earlier. Um, I don't know. It's just I think as artists we just like while we are at it and like exploring our own form, we kind of like don't really care too much about ourselves, and we are always like trying to get lost in the expression and not control ourselves too much. So I guess in that sense, like I felt it, like I got this ache while performing, and then I figured I couldn't bend down. But that doesn't mean that my character couldn't. It was just Hidayat as a performer getting this pain. But obviously there's a limit to it. Like if you like break a bone or something, I'm pretty sure you have to improvise around it and then like do something. But this was something I just thought I could go ahead with it. And at the same time, because I was just thinking as my character at the point, I didn't kind of realize or like it didn't like dawn to me that okay, this is like joy, hurt and pain and you should move or whatnot. Because the character doesn't know that. So the more lost you are in it and the more you let the story take you and operate you, then I guess it just becomes something. And it's if your mind is aware of it, then that becomes a reality. Audition when I was talking about many years ago, it was a very famous actress. She was playing a child who's lost in condition in the refugee camp. So one day, while she was living her life, she started crying. And I thought, my God, that's such an amazing performance. And I was just sitting as an extra in the scene, playing cards with two other refugees. And I thought, this was amazing. And बाद में जब मैंने उनसे बात की तो उनको मेरे घुटने में चोट लग गई थी तो मेरे आंसू so but the great thing was वो उसकी skill भी थी. That was her skill, that whatever pain she was going through, she did not say, oh मेरा पाँव. She didn't do that. She stayed in character and she channeled her energy, whatever the pain she was feeling, and so she let it be part of the scene. That was the beauty. Okay, well, so we're going to keep on this conversation. Maybe Saifee, you and Rehan could kind of have a dialogue about this, and I will keep on kind of butting in. आप लोगों ने थिएटर में भी काम किया है, आप लोगों ने स्क्रीन में भी काम किया है. Saifee would direct people also who are coming from theatre. And of course, Rehan extensively worked in television and theatre and has created productions also, written also for theatre. Did you write for? Right, right. I was reading, I think Pakistan में आपका पहला जो वो हुआ था spotlight पड़ी थी. Saran Sehwai spotted you after you'd written something and performed it. Yeah, we did a huge show that we did
give sketches in a, and then they ask me to appear on a new show on TV, and that's all. तो मेरा सवाल ये कि ये जो थिएटर से अक्सर एक्टर्स आते हैं इनके लिए बड़ा वो होता है कि इन्होंने बिकॉज ये ऑडियंस से बहुत दूर होते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है बड़ी एग्जैजरेटेड होती है इमेजिन होती है तो पर टेलीविजन में सर्टेनिटी कभी कभी चाहिए होती है तो वो कैसे आप बैलेंस करते हो हाउ डज दैट हाउ डू यू वेलकम दीज एक्टर्स थिएटर में टेलीविजन में आमतौर पर जब थिएटर से कोई एक्टर आता है तो मैं मेरे साथ दो तीन ऐसे बाहर कोई थिएटर से लोग लेके आया और वो अपनी थिएटर वाली एनर्जी लेके आते हैं लेकिन क्योंकि बुनियादी तौर पर उनका जो ऑडियंस से जो एक्सपोजर होता है ऑडियंस से हमें परफॉर्म करने से उससे उनका कुछ उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं झाकट मिल जाना उनका वो झाकट मिल जाता है तो वो हमेशा आपको हेल्प भी करता है अगर आप उनसे उनको थोड़ी सी बात समझाएंगे तो उनको बहुत देर नहीं लगती है समझने में मुझे लगता है कि अगर कोई टेलीविजन से एक्टर अगर थिएटर करने जाएगा तो उसको बहुत कुछ मिलेगा लेकिन अगर थिएटर से कोई एक्टर टेलीविजन करने आता है तो वो ऑलरेडी बहुत ट्रेन आदमी है जो जिसको कंट्रोल करना कोई मसला नहीं है आपको एक बात समझाने में बहुत देर नहीं लगती है कि आपको टेलीविजन के लिए इतना जोर से बोलने की जरूरत नहीं है आपको आपकी बॉडी लैंग्वेज वो नहीं होनी चाहिए आपको थिएटर में होती है थिएटर में आपका ऑडियंस 7 मीटर दूर बैठी होती है टीवी आपका कैमरा करीब होता है तो ये चीज़ समझाने में उसको मतलब मुझे बहुत देर नहीं लगी लेकिन हमेशा मुझे थिएटर एक्टर हैं टीवी में बहुत बड़ा इंटरेस्ट है मैं भी बिल्कुल उनसे पूरी तरह से इत्तेफाक भी करता हूँ मेरा तजुर्बा भी यही है कि लोग कहते हैं थिएटर के एक्टर काम होते हैं देयर इज ओनली टू काइंड ऑफ एक्टिंग गुड एक्टिंग एंड बैड एक्टिंग जो अच्छा अदाकार होता है वो मॉडिफाई कर लेता है उसको सिर्फ टेक्निक समझनी है अब एक बड़ा ही है वो अगर एक कुर्सी बना रहा है और एक तख्त बना रहा है जाहिर वो उस स्केल की बात है एक बड़ी चीज बना रहा है उसी तरह का एक्टर है और वो उसको सिर्फ टेक्निक सीखनी है जो चंद अगर वो उसको समझ में आना शुरू हो जाता है कि अब क्लोजअप चल रहा है मुझे ज्यादा मूव नहीं करना उसे सिर्फ टोन डाउन करना उसे कंट्रोल करना और अलबत्ता थिएटर बिकॉज आप उस प्रोसेस से गुजरते हैं आपने 3-4 हफ्ते रिहर्सल्स की होती हैं तो आपने कैरेक्टर पे काम किया होता है तो आप बहुत तैयार होकर जाते हो स्टेज पे टेलीविजन में अलबत्ता हमेशा से कंप्लेन रही है एक दफा सीरियल आपको बुलाते हैं कि लाइट जा रही है और आपको क्लाइमेक्स का सीन दे देते हैं पहले दिन हमारे सर लाइट जा रही है मोनोलॉग मैं भाई ये कैरेक्टर समझ में नहीं आया ये हो चुका है मेरे साथ बच्चा तो इसमें कुछ मैं समझता हूँ कि हमारी टेलीविजन में बहुत कमर्शलाइज इसमें चल रही है तो बहुत दफा ये लोग सोचते नहीं हैं कि भाई ये भी आप इंसानों से काम दे रहे कंप्यूटर को मार नहीं दे रहे कि भाई ये एक्सप्रेशन दे दो या जितना होता है आप दूसरों को मार कर जाते हैं तो 8 कदम दे दे भाई ये अच्छे कपड़ा दे दे एक्टिंग ऐसे नहीं होती है इट्स अ प्रोसेस आपको समझना पड़ता है आपका किरदार का एकदम समझने में कुछ दिन लग जाते हैं जैसे थिएटर में होता है आप कई दफा लाइनें तो याद कर लेते हैं लेकिन आपका रिलेशनशिप क्या है आपस में पूरी कहानी किस तरफ जा रही है या आपको उसमें रह के ही समझ में आता है Well, brother, I'd like to ask you about how's your experience at the Pakistan Theatre Festival? It's just all love. And yes, so we've been so excited. We're having the best time. It's just bummed to go back home on Monday. This is interesting when why many सवाल इसलिए पूछते हैं कि आप लोग बहुत सारे यहाँ के स्टूडेंट्स ही बैठे हुए हैं थिएटर के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं my next question is also waiting for help with us it's with Ruwanthie and Hidaayat lots of times we see we're looking for opportunities and we're hoping somebody would come and provide us with production budget and that's the only way to go about things we don't have the finances, and that's a very harsh reality for most of the people who would want to take an initiative but cannot. Like with Hidaayat, you are doing songs,
you are also writing films in theatre, devising theatre. So, how much do you think is it discouraging for you to go out and look for finances for you to set up a stage or a performance for your audience? You both can have a conversation about this. Yeah, but Goa has like years of experience like dealing with that issue, and I personally think like it's unfortunate that we live in such a capitalist society and like there's no way. It seems like there's no way to do art without this like financial backing and all these resources. But for me, it's always been two very starting different points where there is also, if you really want to do it, there are ways to do it without depending on any resources. For example, like I saw this film back in Sri Lanka, this indie filmmaker. Before the screening, he came forward and he said, I did this film to find out whether I can do a film without any money. And the whole film was shot. So one of the characters was carrying a camera to get a recording of his friend proposing to this girl. And you see the whole film through the lens of his camera. So there are scenes where the camera is on the table and it's facing the wall, but they are having dialogue and everything is happening. But still, it was so interesting and it was quite nice. And at the same time, there's also the like inevitability of not being able to escape not having these resources, and sometimes you have to limit yourself. But also having limits sometimes kind of push you to find things that you never expect you could do. Pick up on Hidaayat's last point, which I think is a very important one. Often when artists are limited, they have to really push themselves to find new ways to say what they have wanted to say. And that is real creativity. Sometimes I have worked sometimes with artists, not in my country, but overseas, sometimes in the West, have a lot of resources. And it sometimes makes you a little bit lazy. And it also limits your imagination and your courage. Because if you don't have this budget or you don't have this expert giving you advice on this, then you're not going to bother to do it. But in the theatre, where you have to do everything, right? You just really push yourselves, and you have very very limited resources. The other thing I want to say about that about this connection between money and the arts is that we have to be very careful as artists, and I don't want to sound idealistic, but I say this a lot because this seems to be the thing that we're losing as the world becomes goes more into the clutches of corporate financing. यहाँ पर जगह जगह थिएटर कॉर्नर बनाए गए हैं। आप लोग देख रहे हैं कि जी थिएटर कॉर्नर है यहाँ पर, और जिस पर डिफरेंट थिएटर एक्टर्स और थिएटर परफॉर्मेंस, चाहे जैसे आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, इस वक्त अनवर मकसूद आपको नज़र आ रहे हैं, मोइन अख्तर नज़र आ रहे हैं, राहत काज़मी नज़र आ रहे हैं। ये वो लेजेंड्स हैं हमारी थिएटर इंडस्ट्री के, हमारी परफॉर्मिंग आर्ट इंडस्ट्री के। तो इन सबको यहाँ पर ट्रिब्यूट दिया जा रहा है। तो आगे चलें और देखते हैं कि जी इस इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल में जो कि आर्ट्स काउंसिल में हो रहा है, इसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा गया इसके इवेंट के होने से पहले। No, that's the, I will do something that you cannot imagine, and if you have faith in me, finance that. Don't tell me what to do. I will do what I want, but if you have faith in me, support me in taking that risk. Creativity up. And that's, people don't like putting money behind risk takers. Increasingly, people like putting money behind the ones that they feel safe with. And because of social media and numbers and all of that, people just keep producing what the audience demands. That's ridiculous. That is not what artists are made to do. That was beautifully said. I'm going to pause my questions here and maybe take 2 questions from the audience. अस्सलाम वालेकुम।
I am Kamran Javed Aziz, and I am FM radio RJ, film critic, and digital content creator. Before asking a question, I would like to welcome the Sri Lankans by narrating the Pakistani film song line "के लूटा करार मेरे मन का हाय रे हाय Sri Lanka," and and you have stole our heart. Okay, sure. Okay, my question is that you have discussed about the actor's perspective who's switching from theater to screen or screen to theater. What you say about the director's perspectives? Because there is a very big difference when the theater director switch from theater to screen and from screen to theater. What do you say, sir? I think we covered this. Television is the theater, and I haven't directed much. I'm mostly an actor. I write as well. But the question is, what's your question exactly? If the theater actor when he goes to film, Sir, it has been discussed. I'm asking about the director. When the theater director move from theater to film, I think or the vice versa. it's again what Sam said earlier. This is storytelling is important. Whether you do theater, radio, film, I have seen one of the greatest directors was Sam Mendes, who used to do theater, and Spielberg flew him to direct American Beauty, which won Oscar. This is his first film. He was only a theater director. Now, film has a lot of technique to it. Yeah, but you can hire the technicians. If you know how to tell a story, you can hire the tech. But you must know how to tell a story. That only comes That's by amazing. doing theater or film, doing your work, but being a writer who knows how to tell a story. Thank you, sir. Thank you. I'd like to move to the second question. So I think with acting and performing, also like that's how I have found my way of going into that focus and being connected and letting the universal energy carry me rather than me carrying myself in that present instance. So yeah. सर सर अपना एक्सपीरियंस बताएं पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल के बाद आप थिएटर इंडस्ट्री को कहाँ देखते हैं? मैं खुद थिएटर में रिटर्न कर रहा हूँ बहुत से बाद और बड़ी खुशी हो रही है देख के गहमा गहमी के कराची आर्ट्स काउंसिल ने इतनी एफर्ट की है कि 40-45 प्लेस जितने भी प्लेस यहाँ हो रहे हैं हर रोज़ हो रहे हैं ये गुफ्तगू शुरू हो गई मतलब हम बाहर तो ज़्यादातर आपको खबरें देखते हैं तो अच्छी खबरें नहीं होती कि बिजली के बिल हो गए ये हो गया महंगाई हो गई इन्फ्लेशन लेकिन ये एक कौम को एक के लिए बड़ा ज़रूरी है ये क्रिएटिव प्रोसेस ये अपनी भड़ास यहाँ आपकी आर्टिस्ट लोगों की भड़ास निकलती है शायरी से थिएटर से स्टोरी टेलिंग से ड्रामे से तो ये मैं तो कह रहा हूँ ये बहुत बड़ी सर्विस है मुझे तो लगता है कि ये सारे बच्चे जो जमा हुए हैं और ये कोई मस्बत काम कर रहे हैं रादर देन बीइंग आउटसाइड एंड डूइंग समथिंग दैट शुड बी और ये इनको ऐसे लोगों की सोबत मिल रही है जो बाहर से भी आए हुए हैं उनका काम भी देख रहे हैं उनके ख्यालात भी सुन रहे हैं आई थिंक इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस इट्स अ ग्रेट थिंग दैट आर्ट्स काउंसिल एंड शाह साहब थैंक यू सर. Who have contributed to this conversation. I would like to invite the President, please come to the stage and present our banners with the souvenir. Thank you so much. Thank you, buddy. Thank you so much, Saifee Hassan. Thank you, Rehan Sheikh. And thank you, Kaif Ghaznavi. One is Mahmoud Ghaznavi, one is Chickera. We have to be famous stars.
तो जनाब आपने आज का टॉक शो देखा है, टॉक शो को पसंद भी किया होगा, मज़ा भी आया होगा। हमने आपको जितना ज़्यादा कंटेंट हम आपके साथ शेयर कर सकते थे उतना हमने आपके साथ शेयर किया, और आपने जाना कि थिएटर और स्क्रीन में क्या फ़र्क है। एक प्रोफेशनल जो ओपिनियन होती है वो आपने देखी। इसी तरह का मज़ेदार सा कंटेंट के लिए देखते रहिए BammTV.pk। अल्लाह हाफ़िज़। I'm Ali Khan. Don't forget to watch Bamm TV, BAMM. I'm Samina Ahmed. Don't forget to watch Bamm. And don't forget to watch Bamm TV. Tell me your name. Batala Mustafa. Okay. Batala Mustafa, and I'm the choreographer for the title. प्लीज़ पैम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और देखते रहिए। Please click and subscribe. Thank you. इस वक्त मैं बैम से मुखातिब हूँ। मेरा नाम अब्दुल मकसूद है। इस चैनल को ज़रूर देखिएगा। Assalamu alaikum. मैं हूं नईम अब्बास। Don't forget Bamm.